concept under discussion is Bronsted lowery acid and Bronsted lowery base. Beta, before studying the concept of acid, let me explain the concept for proton. So we discussed in atomic structure as well that proton is actually hydrogen ion. H positive will be considered as a proton. As you know that hydrogen atom has one proton in the nucleus and no neutron in the nucleus, right? And one electron in the shell. This is actually hydrogen atom, right? So what happens if this hydrogen atom say this electron is removed, so only nucleus will be left if electron from hydrogen atom is removed. So सिर्फ nucleus रह जाएगा. And nucleus of hydrogen contains one proton. Hydrogen nucleus contains one proton. So that is why hydrogen nucleus is actually hydrogen ion. Because electron removal से shell, there will be no shell as electron is removed. So if we get hydrogen ion, so hydrogen ion is actually a proton. So जब भी इस entire chemistry में we refer to proton, so it means we are referring to H positive, right? हमेशा proton का मतलब H positive होगा, or the substance which donates H positive is acid. So acid will be proton donor. Acid is proton donor. So this can be asked for 1 mark. And Bronsted lowery base, beta. In Bronsted lowery base, we will consider a substance which accepts that proton. So base is proton acceptor. Base is a particle which accepts proton. Or proton is actually hydrogen ion. H positive, हमने decide किया. H positive will be taken as proton. So for example, consider this reaction. This is ammonia reacting with HCl. And the products will be ammonium ion and chloride ion. Ammonium ion is formed and chloride ion is formed. अच्छा बेटा आप इसको compare करें. Just compare the left hand side and the right hand side. Just compare NH3 with NH4 positive. So what you conclude beta? NH3 has accepted H positive. तभी तो NH3 turned into NH4 positive. Right? NH3 में आप देखिए कितने protons हैं? 3. NH4 positive में कितने protons हैं? 4. So what it means कि NH3 has accepted 1 proton. तभी तो 3 protons से 4 proton बन गए. So NH3 is acceptor here. Proton acceptor is NH3. Therefore, NH3 will be taken as base. On the other hand, you have to compare this HCl with chloride ion. HCl को chloride ion से compare करें. HCl में there is 1 proton. Chloride ion में there are 0 protons. तो इससे यही पता चल रहा है HCl में 1 proton है और फिर right side पे proton नहीं है. It means that HCl is proton donor. The proton donor HCl, the proton donor will be taken as acid. जी बेटा, any confusion? So we will say NH3 is Bronsted lowery base and HCl is Bronsted lowery acid. असल में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्टिकल है ना उसे राइट हैंड साइड से यू नीड टू कंपेयर इट और फिर देखें कि प्रोटॉन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. अगर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं फिर इट मींस प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ है और अगर प्रोटॉन कम हो रहे हैं तो इट मींस प्रोटॉन लॉस हुआ. तो लॉस ऑफ प्रोटॉन विल बी एसिड और जो जिसने एक्सेप्ट किया है दैट विल बी बेस. कंफ्यूजन बेटा? For example, if I take this equation, HCl reaction with H2O and the product is H3O positive and Cl negative. So here I need to compare this HCl with chloride ion or H2O with H3O positive ion.
तो बेटा क्या कंक्लूजन है? HCl में there are 1 protons और क्लोराइड में no protons. इसका मतलब क्या है कि HCl has donated its proton. HCl is proton donor है तो this is acid. H2O में 2 protons हैं, H3O positive में 3 protons हैं. It means H2O has accepted a proton. H2O is proton acceptor. That is why it will be taken as base. So in this equation, H2O is acting as base, HCl is acting as an acid. Right? So let us take another example. Suppose if ammonia is made to react with water and the products are given. ये बेटा वो डिस्कशन है कि आपको products given होंगे और फिर आपने conclude करना होगा इस केस में. If the given equation is like this, or ये equation will be given, so then beta, how will you decide that which particle is acid and which particle is base? जी beta, how will you decide? Which thing is acid in this case? Which thing is base? You need to compare NH3 with NH4 positive. NH3 has 3 protons, NH4 positive has 4 protons. It means that ammonia has accepted proton. Ammonia agar proton acceptor hai, so this will be base. Proton acceptor is base. और H2O में you have 2 protons, OH में you have 1 proton. तो देखो H2O से proton कम हो गए. It means H2O is donor in this case. So H2O donor है, तो it means H2O is acid. Right? अब देखें ऊपर वाली equation में here H2O is acting as a base. ये ऊपर वाली equation में H2O base था. नीचे वाली equation में H2O is acid. तो yes, ये equation to equation vary करेगा. तो H2O के दोनों बिहेवियर हैं. ऊपर वाले इक्वेशन में H2O बेस है, नीचे H2O एसिड है. तो we can say कि H2O is amphoteric according to Bronsted lowery theory. H2O is amphoteric. You know this thing from your O-level studies, कि the particle which can behave both as an acid or base will be considered as amphoteric substance. So yes, water is considered as amphoteric substance. Then बेटा अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है. अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आई इनकरेज कि आप क्वेश्चन पूछे जरूर. ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें कॉन्सेप्ट है कि एसिड विल ऑलवेज प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस. एसिड will produce conjugate base, and base will produce conjugate acid. Base will produce conjugate acid. Right, beta? So इस concept को अब apply करें. For example, here, if I take CH3COOH and if I react it with OH negative, the product is CH3COO negative plus H2O. So better left hand side पे you have to decide acid and base. Left hand side पे acid and base होंगे और right hand side पे conjugate acid and conjugate base होंगे. तो आप बेटा डिसाइड करें अबाउट दिस एथेनोइक एसिड. देखिए एथेनोइक एसिड का एक प्रोटॉन मिसिंग है राइट हैंड साइड पे. ये लग रहा है कि एथेनोइक एसिड इज प्रोटॉन डोनर है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एसिड. और OH को बेटा आपने कंपेयर करना है H2O से. OH में एक प्रोटॉन ऐड करे तो यू गेट H2O.
It means कि OH is proton acceptor. That is why this is base. ठीक है? अब ethanoic acid से this ion is formed, which is ethanoate ion. So ethanoate ion is conjugate base. Because what we studied above, कि acid produces conjugate base. और एथेनोएट आयन बेटा बेस हो भी सकता है, आप देखें इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल रेडिली एक्सेप्ट प्रोटॉन. एथेनोएट आयन ये नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन क्या करेगा, रेडिली एक्सेप्ट करेगा ना प्रोटॉन, रेडिली एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो जो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा. तो ये एथेनोएट आयन बेस है. और कॉन्जुगेट बेस बेटा इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट साइड पे है, या इस रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, या एथेनोइक एसिड से प्रोड्यूस हुआ. तो एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगा. और OH बेस था, उसकी वजह से वाटर प्रोड्यूस हुआ, तो वाटर विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्जुगेट एसिड. वाटर इज कॉन्जुगेट एसिड. कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. If you have any confusion, you can ask better. No confusion. ठीक है. Suppose given equation ऐसे हो कि H2SO4 is made to react with HNO3. The product is H2NO3 positive and HSO4 negative. फिर आप इसमें पहले बताएं एसिड कौन सा पार्टिकल है और बेस कौन सा पार्टिकल. तो सल्फ्यूरिक एसिड को देखें और HSO4 को देखें, इन दोनों को कंपेयर करें. What you conclude कि H2SO4 is proton donor, इसने प्रोटॉन अपना दे दिया है. That is why प्रोडक्ट साइड पे जो HSO4 है वो प्रोटॉन डेफिशिएंट है. तो H2SO4 will be acid. तो ये प्रोडक्ट साइड पे जो HSO4 है, this is conjugate base, क्योंकि acid will produce conjugate base. On the other hand ये HNO3 देखें, ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन. HNO3 में देखें एक प्रोटॉन है, लेकिन राइट साइड पे H2NO3 इसमें दो प्रोटॉन्स हैं. HNO3 in this very reaction, okay, in this very reaction it is acting as a base. ये एसिड और बेस जो है ना, ये रिलेटिव टर्म है. ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेंगे. इक्वेशन में हम डिसाइड करेंगे विच एवर थिंग इज लूजिंग प्रोटॉन वो एसिड होगा, विच एवर थिंग इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो बेस होगा. HNO3 in this case, in this very equation is acting as a base. लेकिन राइट साइड पे बेटा it is producing the particle which is conjugate acid. ठीक है. कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप बताएं कि एसिड conjugate base pair. They may ask you just write acid and conjugate base pair. The acid conjugate base pair for this very reaction will be acid was H2SO4 and conjugate base was HSO4. तो ये consider होगा acid conjugate base pair. They may ask you to write base conjugate acid pair. The base or conjugate acid pair will be base in this very equation is HNO3 and conjugate base pair, conjugate acid in this case is H2NO3 whole positive. जी बेटा, if you have any question you can ask. जी, no question. Okay, next thing beta is just अभी HNO3 की बात हुई. If the same HNO3 is reacted with water, if we placed HNO3 in water, this kind of reaction happens. H3O positive forms and NO3 negative ion is formed, nitrate ion is formed. Now beta HNO3, so you have to compare it with nitrate ion. This is acid because ये proton donor है.
Nitrate ion will be conjugate base. On the other hand, water in this case is base because it is accepting proton. लेकिन water से H3O positive बना, which is considered as conjugate acid. So this is how it goes, right? अच्छा, आप थोड़ा बेटा ये कॉन्सेप्ट जरा जहन में रखें कि NH3 in your syllabus it will be taken as base or alkali, right? NH3 base होगा और NH4 positive will be taken as acid. ये जरा इसको याद रखें, ठीक है? इस बात को आपके सिलेबस में अमोनिया will be taken as base और NH4 positive will be taken as acid. ठीक है? Now beta examiner may ask this kind of question कि write an equation to show NH3 as an alkali. ठीक है? तो अब NH3 को आपने कोई किसी इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है कि ये एज एन एल्कली एक्ट कर रहा है, तो हाउ शुड आई राइट द इक्वेशन? NH3 को मैंने एल्कली शो करना है या बेस शो करना है, तो NH3 शुड एक्सेप्ट प्रोटॉन. तो आई कैन रिएक्ट दिस NH3 विद HCl. ठीक है? और ये NH3 क्या करेगा? HCl से प्रोटॉन ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा. तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इट बिकम्स NH4 पॉजिटिव and Cl negative. So just you can see कि NH3 is acting as a base here because NH3 के प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं. अदरवाइज बेटा आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट NH3 plus H2O. कभी कभी वो क्वेश्चन में कहते हैं कि राइट एन इक्वेशन टू शो NH3 as an alkali and water as an acid. At times they can ask कि आप water को लें इक्वेशन में. तो इस तरह ले आप NH3 को आपने शो करना एज अ बेस, तो बेस ने तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, तो फिर ये NH3 वाटर से प्रोटॉन लेके NH4 पॉजिटिव बन जाएगा and water will turn into OH negative. So this is how you can write the equation. Otherwise you can write equation like this as well कि NH3 ले, उसको एक से प्रोटॉन से रिएक्ट करवा के NH4 पॉजिटिव बना ले. So once again notice कि NH3 is accepting proton. NH3 proton accept कर रहा है, that is why NH3 is base. Any confusion बेटा? इसी तरह they can ask to write an equation to show NH4 ammonium ion as an acid. Ammonium ion को as an acid show करें. They may ask you इक्वेशन लिखें जिसमें अमोनियम आयन एज एन एसिड एक्ट कर रहा हो. हाउ वुड यू शो? NH4 पॉजिटिव को आपने एज एन एसिड शो करना. यू कैन रिएक्ट इट विद OH. एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होगा ना. NH4 पॉजिटिव को एज एन एसिड शो करना, ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है. तो NH4 पॉजिटिव अपना प्रोटॉन OH को दे दे तो खुद ये बन जाएगा NH3 और OH बन जाएगा वाटर. OH प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, NH4 पॉजिटिव प्रोटॉन लूज कर लेगा. You will get these kind of products. Suppose आप OH अगर नहीं लेते, you want to take NaOH. Suppose आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना चाह रहे हो. What happens then कि ये NH4 पॉजिटिव का प्रोटॉन इस OH में आएगा. You will get NH3. NH4 पॉजिटिव तो लूज करेगा प्रोटॉन, NH3 बन जाएगा. और जो ये OH है, OH will accept proton to make water, or sodium ion will appear as spectator ion. ठीक है? Sodium ion will be left behind. तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर आप NH4 पॉजिटिव को वाटर से लेना चाहते हैं, H2O से,
फिर इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि आपने NH4 पॉजिटिव को, यू हैव टू शो NH4 पॉजिटिव एज एन एसिड। तो अब ये अपना प्रोटॉन वाटर को देगा, वाटर बिकम्स H3O पॉजिटिव और अमोनियम आयन टर्न्स इनटू NH3। तो आप इनमें यू कैन राइट एनी ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको एग्जामिनर ने आपकी चॉइस लिमिट नहीं की और आपको कहा है कि कोई भी इक्वेशन लिख दें, तो आप यू कैन राइट एनी ऑफ द इक्वेशन। तो बस अगर आपको एग्जामिनर ये कहे कि इक्वेशन लिखें और इसमें पर्टिकुलर पार्टिकल को एज एन एसिड शो करें, तो आपने उस पार्टिकल को या OH से रिएक्ट करवा दें या वाटर से रिएक्ट करवा दें, राइट। These kind of question may also be asked. So इसमें बेटा एक मैं और भी आपको बता दूं, आप ओ लेवल्स में एक रिएक्शन पढ़ते थे। रिएक्शन क्या पढ़ते थे ओ लेवल्स में? अमोनियम सॉल्ट और एल्कली, ये ओ लेवल का रिएक्शन था। इसमें बेटा आपको याद है आप क्या प्रोडक्ट्स पढ़ते थे? Whenever ammonium salt reacts with alkali, ये फर्टिलाइजर्स में आप पढ़ते थे, फर्टिलाइजर्स और एल्कली के रिएक्शन से you get salt, you get ammonia gas evolves and water is formed. तो इसकी लॉजिक क्या है इस रिएक्शन की? इस रिएक्शन की लॉजिक भी ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट है इसमें इन्वॉल्व है। लेट्स से मैं कोई अमोनियम सॉल्ट लूं, अमोनियम क्लोराइड, और एल्कली ले लूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब नाउ इस अमोनियम सॉल्ट में यू हैव NH4 पॉजिटिव और एल्कली में यू हैव OH नेगेटिव। तो अब आप देखें ये अमोनियम आयन इज कंसिडर्ड एज एसिड और OH आयन इज कंसिडर्ड एज बेस। तो NH4 अपना प्रोटॉन किसको देगा? चूंकि ये एसिड है, NH4 विल गिव इट्स प्रोटॉन टू OH। OH से तो बन जाएगा वाटर और NH4 पॉजिटिव से बन जाएगा NH3। What you are left with, you are left with sodium ion and chloride ion. They will combine together to make salt. This is how this reaction works. Let's say अगर आपके पास वो magnesium hydroxide, ठीक है, and you are reacting it with ammonium chloride. But how would you proceed? देखें, how many hydroxide ions you have? You have 2 hydroxide ions here. So 2 hydroxide ions के लिए you need 2 protons. So that is why 2 ammonium ions required. 2 ammonium ions will lose 2 hydrogen ions. तो इसलिए ये जो अमोनियम क्लोराइड ऊपर इक्वेशन में इसको 2 ले ले, राइट। यहां से क्या बनेगा? 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 H2O बनेंगे एंड द अदर प्रोडक्ट इज NgCl2. Once again इसमें Bronsted लोरी एसिड will be considered as NH4 or Bronsted लोरी base will be considered as this OH. So beta, this was the discussion for Bronsted lory acid and base.